Welcome back in another lecture on psychoanalytic theory. Here in this lecture, we will be discussing Jacques Lacan. In the previous lecture, we have discussed C.G. Jung. So now, let's see Jacques Lacan. Jacques Lacan was born in 1901 and he was died in 1981 on September 9, and his birthday was 13 April. This birth and death day is not important, just remember the year of birth and year of death so that you can locate his time span. He was a French psychoanalyst and psychiatrist who has been called the most controversial psychoanalyst since Freud. Remember this point, the most controversial psychoanalyst since Freud. In 1951, Lacan started to hold a private weekly seminar in Paris, in which he inaugurated what he described as a return to Freud. Remember that? He gave the concept of return to Freud in his regular private weekly seminar that was started in 1951. So let's move ahead and understand what is return to Freud. Return to Freud emphasizes a renewed attention to the original texts of Freud. एक्चुअली ये एक तरीके का मूवमेंट कह सकते हैं, एक तरीके का इनिशिएटिव कह सकते हैं, which attracts the attention of people towards the original texts of Freud and his concept. He proposes that the unconscious is structured like a language. Remember that here we find the root of structuralist psychoanalysis theory, and he combined the linguistics properties, linguistics ideas, and theories of Saussure and psychoanalytic ideas of Freud. And here is the root of psychoanalytic. Sorry, here is the root of structural psychoanalytic criticism. So, he proposed that the unconscious is structured like a language. Means यहाँ पर भी means this Lacan is also focusing on the unconscious of human mind, and according to Lacan, this unconscious of human mind is can be structured. This unconscious can be structured like a language. In the same manner as we structure a language into sign, signifier, and signified according to Saussurean concepts. So Lacan proposed that this unconscious also can be structured like that. So he combined the Freudian theory with the linguistics of Saussure and Emily Benveniste. So next, just come to some of his works. First work is here, Eris. Eris. It was published in 1977, and the second one is the four fundamental concepts of psychoanalysis. ये पूरा एक ही वर्क है, the four fundamental concepts of psychoanalysis. It was also published in 1977. These are highly influential for the post-structuralist and feminist. Means these works are also influential for the post-structuralist thinkers as well as feminist thinkers too. Lacan's concept, a model of identity formation that takes a three-stage process or order. ठीक है, लकान के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें थ्री स्टेज ऑर्डर आते हैं. रिमेंबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना था और पूछा यही गया था, विच ऑफ दीज फॉलोइंग
concepts does not proposed by Lacan. तो ये रिमेंबर करिएगा कि ये तीन कॉन्सेप्ट्स लगान ने प्रपोज किए, दैट इज इमेजरी, द सिंबॉलिक, द रियल, द इमेजिनरी, द सिंबॉलिक, द रियल। ओके, ये थ्री कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको प्रपोज किया किसने, आर प्रपोज्ड बाय लैकन। जस्ट मूव अहेड। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इमेजिनरी child makes its first identification, means through image, through mirror. Here in this stage, in this process, a child makes his her first identification, and this identification was made through mirror into image, and this stage is also termed as mirror stage by Lacan. And mirror stage is homologue for the mother child symbolic relation. ओके, तो यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये मिरर स्टेज जो है चाइल्ड मदर सिंबॉलिक रिलेशन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर इस स्टेज में बच्चा खुद में और मदर में कोई डिफरेंस नहीं कर पाता है। दिस इज द मिरर स्टेज। आगे बढ़ेंगे। ही सीज मदर एंड हिमसेल्फ एज द सेम। जो बच्चा यहाँ हिमसेल्फ बच्चे के लिए यूज हुआ है, ठीक है, मदर और बच्चे यही उसकी दुनिया है अभी, और इन दिस सिचुएशन, इन दिस कंडीशन, इन दिस स्टेज, he is unable to make any difference between the two, mother and himself. इस स्टेज में बच्चा जो है वो खुद में और मदर में कोई डिफरेंस नहीं कर पाता है। डिफरेंस आगे चल करके उसको समझ में आता है। Thereafter Lacan describes that the child as the signifier and the mirror image reflection as the signified. Just here is the Saussurean ideas. When a child is before in front of an mirror, in front of a mirror, and he is seeing an image, a reflection on the mirror. So here the actual child is signifier and the image is a reflection which is shown in the mirror is signified. Okay, according to Saussurean linguistics, Saussurean structure. So let's move ahead to symbolic stage. The symbolic stage, when the child acquires language. This is a stage of I think about 2 year or 3 year, when child starts acquiring language, जब उसे धीरे धीरे लैंग्वेज की समझ होने लगती है, दैट इज मदर टंग। ओके, एंड द चाइल्ड एंटर्स इन द सोसाइटी एंड सोशल रिलेशंस, और यहीं से बच्चा जो है सोसाइटी और सोशल रिलेशन में आने लगता है। देखिए 1 साल तक का जो टाइम होता है, बच्चा खुद और मदर तक सीमित रहता है, बहुत उसको सोशल रिलेशंस नहीं समझ में आते हैं। बट व्हेन ही acquires starting acquires language, then he finds that there is someone father and someone mother and someone brother and so many relations, and he starts to enter into relation. Thereafter he uh, makes difference between these names, these words. Okay, so the child discovers social relations by being aware of and endless chain of signifiers. यहाँ जो है एक endless chain of signifiers उसको मिलती है। There is some signifier for father, there is some signifier for mother and brother, grandpa, grandma, etc and etc. बहुत सारे उसको सिग्निफायर्स नजर आते हैं, और उनमें फिर उसको धीरे धीरे डिस्टिंग्विश करना होता है, धीरे धीरे जो है उसमें चेन अंतर करता है, और वो चेन ऑफ जो रिलेशंस होती है उसके सामने मिल जाती है, और फिर धीरे धीरे उसको ये समझ में आता है दैट इज अपोजिशन एंड एब्सेंस। जो हम लोगों ने लिंग्विस्टिक्स में पढ़ा था, सॉस्योरियन आइडियाज में पढ़ा था, दैट इज की एब्सेंस एंड प्रेजेंस, ठीक है, एंड अपोजिशन। तो उसे एब्सेंस समझ में आता, देयर इज दिस स्ट्रक्चर लाइक फादर एंड दिस नेम इज फादर, बोथ आर signifier and signified,
and this concept is understood to the person, and he make distinguishes between the persons and the names. He finds that this word father is associated to that particular person, and the word mother is also associated to that particular mother. Okay, and this father and mother is not associated to any other मेल और फीमेल और अदर ह्यूमन बीइंग। तो वो इन जो सिग्निफायर्स हैं उनको अलग अलग सिग्निफाइड के साथ चीजों को एसोसिएट कर लेता है, एंड दिस चेन ऑफ सिग्निफायर्स, endless chain of signifiers made a child aware to the relations and social relations, and here he enters into the society. And when he enters into society, he came to the real stage, and real stage is the third stage of Lacan. In this stage, the order that both the imagery and the symbolic try to control. Means here in this stage he tries to control all the imaginary and symbolic things and the real things. ठीक है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है। मीन्स ही एंटर्स इन द रियल स्टेज एंड ही यूजेस psyche, he uses mind, and he has understanding, proper understanding of all those things. तो ये 3 स्टेजेस बताई लकान ने, और उन्होंने एक जो है स्ट्रक्चर का यूज किया, और दूसरी चीज इन्होंने फ्रायड को कनेक्ट किया किससे, शश्योर से। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, और इनके जो 3 स्टेजेस हैं इनसे क्वेश्चन बन सकता है, मिरर स्टेज से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, और कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, द अदर कॉन्सेप्ट एंड अदर वर्क्स। एंड यहाँ पर देखिए 3 वर्क हैं किसके, हैरोल्ड ब्लूम के। हैरोल्ड ब्लूम बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी उनके वर्क्स हैं, उसको देख लेना चाहिए। 3 works of Harold Bloom, that is Agon, that is was published in 1983, and second one is that a map of misreading, that was published in 1975, and the anxiety of influence, it was published in 1983. So if we arrange them in an order, in a chronological sequence, we find that a map of misreading first, and thereafter Agon and anxiety of influence. This would be chronological order of these 3 works. So remember 3 works by Harold Bloom. He was also a post-structuralist psychoanalytical theorist. ठीक है, ये साइकोएनालिसिस की स्ट्रक्चरल पोस्ट स्ट्रक्चरल अंडरस्टैंडिंग या स्टडी करते हैं। Thereafter, Gilles Deleuze and Felix Guattari developed a concept of schizoanalytical, schizoanalysis. Schizoanalysis, remember the spelling, SCHIZOANALYSIS. Schizoanalysis concept पूछा जा सकता है, एक तो मैचिंग में पूछा जा सकता है किसने डेवलप किया। सो दिस concept of schizoanalysis is developed by Gilles Deleuze and Felix Guattari, and they wrote famous works like Anti-Oedipus, that was published in 1983, and A Thousand Planets, and it was published in 1987. Remember, these both works are written in collaboration with Deleuze and Guattari. ठीक है, तो इतना ही लगभग हम लोगों ने समझ लिया, जो भी समझना था, जो भी आपके काम का था, आपके एग्जामिनेशन पर्पस से, दैट इज आई थिंक एनफ फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस। हम ये नहीं कह सकते दैट आई हैव completed psychoanalysis theory 100%, but I have covered almost all those things which can be asked in your examination and important for your examination purpose. ठीक है, and this series cannot make you an expert of the psychoanalysis, but can qualify you the examination. This can make you attempt all the questions which will be asked in the examination. आई थिंक आपको ये पूरी सीरीज समझ में आई होगी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, जरूर बताएं। कोई क्वेश्चन आपका आता है पूरी सीरीज के किसी एक लेक्चर से, किसी पार्ट से, देन आप उसको भी कमेंट में जरूर लिखें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।